Hi foodies, मैं हूँ रचना and welcome to Food Munch presented by City Tadka in association with Ghumau क्या। अब घूमने के साथ लगेगा फूड का तड़का। अब मैंने कहा है फूड का तड़का लगेगा तो आज हम लगाने वाले हैं तड़का वड़ा पाव का, लोनावला का फेमस गोल्डन वड़ा पाव, क्योंकि हम हैं लोनावला में, दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन महाराष्ट्र, और आज हम खाने वाले हैं यहाँ का फेमस गोल्डन वड़ा पाव। So let's try. Well, यहाँ पे आपको मिलता है मूंग दाल का भजिया भी, which is also very tasty, which I'm going to try for you guys. And आपको यहाँ पे मिलेगा भजिया के अलावा there's samosa, there's gulab jamun, there's lot of the stuff you can try, but vada pav is the most X factor of this place. So let's just try it out quickly. Super tasty. This is a one try, guys. लोनावला में जो भी आता है वो ये वड़ा पाव ट्राई करता है. And you know what is the best part? ये लोनावला के main market में है this golden vada pav place. You can just come and try this out. This is super tasty, guys. Now I tell you why is this thesa. Actually it is a very common chutney, but इसको कूट के बनाया जाता है. That is why it is known as thesa, and it is very spicy. It's full of chilies. Wait, I'll get you a better introduction about thesa. Hello sir, आप मुझे प्लीज अपने thesa के बारे में बताइए. What is special about thesa? क्या होता है thesa? thesa में होता है हरा मिर्च, धनिया, पुदीना, जिंजर, अदरक. Oh wow. So it is full of spices. Spices और digest spices. Okay, so digestion में help करता है. जिंजर है, पुदीना है. इससे perfect digestion. धनिया है. All right. बाद में इसको फ्राई करना है. हींग वगैरह. Okay. फ्राई है. So guys, let me tell you this most important thing. Golden vada pav 50 साल पुराना है. इससे ज़्यादा हो गया. 50 साल से ज्यादा हो गया होगा. So guys, if you come to Lonavala, आपको try करना है golden vada pav, right sir? Thank you, thanks a lot. So अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया guys, please follow, share and subscribe to Ghumau and City Tadka for more interesting food related content.